Hello friends, मेरा नाम है हर्षल काकड़े and I would like to welcome you all on the channel step by step. In today's video, we are going to discuss about equity. Equity um, is a part of investment banking. So if you are looking for a job change in investment banking as a QA, so you should always know what is equity. Domain knowledge is must for QA guys. So let's start. Okay, so what is equity? क्या है equity? Equity is the value of an asset less the amount of all liabilities on that asset. So if we have to consider equity, equity equals to assets, whatever assets you have minus the liabilities. So that's how the mathematically equities will be represented. Equity can be considered as one's ownership in any asset after all debts associated with that assets are paid off. Okay, so suppose नीचे हम देखेंगे कि कार का एग्जांपल देखेंगे, हाउस का एग्जांपल देखेंगे, सो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट आर असेट्स एंड व्हाट आर लायबिलिटीज. ओके, for example, a car or house with no outstanding debt is considered entirely the owner's equity because he or she can really readily sell the item for cash. So हम सबको पता है, अगर if there is no outstanding loan against your home, there is no home loan or there is no other um, loan against your property, so that property is your equity or that property is your asset and you can sell it at any point of time. So वो क्या कर सकता है कि readily आपको cash available कर सकता है. So that's one thing. And pocket the resultant sum. Okay. Stocks are equity because they represent ownership in a firm. अभी stocks क्या है ना, stocks भी एक इक्विटी है और एक असेट है. वो आप जो भी फर्म के आप स्टॉक्स ले रहे हो, जो भी कंपनी के आप स्टॉक्स ले रहे हो, उसका ओनरशिप आपको उसके उतना उसका ओनरशिप आपके पास है, ये शो करता है. दो ओनरशिप ऑफ शेयर्स इन अ पब्लिक कंपनी जनरली डज नॉट कम विथ अकम्पनिंग लायबिलिटीज. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है. ऑल्दो आपके पास उस कंपनी के शेयर्स है, वो शेयर्स आपका असेट्स है, बट उस कंपनी के अगेंस्ट जो भी लायबिलिटीज होगी, दैट लायबिलिटीज वो आपकी लायबिलिटीज नहीं है. सो इट्स मतलब यहाँ पे ऐसा है कि असेट है बट लायबिलिटी नहीं है. ऑल्दो देयर इज अ रिस्क एंड दैट रिस्क क्या है, वो इक्विटी असेट्स के बारे में वो हम नीचे देखेंगे. The following are more specific definitions for the various form of equity. A stock or any other security representing an ownership interest. ओके, स्टॉक और एनी अदर सिक्योरिटी, कुछ भी हो, स्टॉक हो या फिर कोई अदर सिक्योरिटी हो, लाइक इन यूएस देयर इज ए पी नोट, लीपो, टीआरएस स्वैप, सिंगल स्वैप, व्हाटएवर, राइट. सो कोई भी सिक्योरिटी का फॉर्म हो, या अपने यहाँ फ्यूचर्स हो या फिर और ऑप्शंस हो, कोई भी सिक्योरिटी का जो फॉर्म हो जिससे उसका ओनरशिप जो है वो आपके पास दिखता है, दैट इज योर एसेट. This may be in a private company, not publicly traded. Publicly traded means listed on the exchanges like Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange for India, and for outside like uh, it's London Stock Exchange or like this. So those are called publicly traded. But there will be some private companies, though those are not listed. So private companies are those for which the ownership of the company is with very, ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ लोगों के पास या फिर कुछ फैमिलीज के पास ही है, वो एक ही फैमिली के पास ओनरशिप है, सॉर्ट ऑफ. ओके. On a company's balance sheet, the amount of the funds contributed by the owner, the shareholders, plus the retained earnings or losses, also referred to as stockholders equity or shareholders equity. Okay. In the context of margin trading, the value of securities in a margin account minus what has been borrowed from the brokerage. Okay. We all know that हम कब मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं, जब हम इंट्राडे करते हैं तो मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं. तो मार्जिन ट्रेडिंग क्या होता है बेसिकली कि सपोज आपके पास 1000 रुपीज है, बट स्टिल सम ब्रोकरेजेस क्या करते हैं कि आपको अलाउ करते हैं कि यू कैन परचेज द सिक्योरिटीज ऑफ 5000.
ओके, बट वी ऑल नो दैट कि वो जो ऊपर के 4,000 होते हैं फॉर परचेसिंग दी शेयर्स ऑफ 5,000, वो बेसिकली जो ब्रोकरेज है, ब्रोकर है आपका, लेट्स से एचडीएफसी, आईसीआई और जीरोधा और शेर खान, वो देता है। सो इट्स सम, सो बेसिकली इन्वेस्टर क्या कर रहा है ना कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो बोरो कर रहा है फ्रॉम द ब्रोकर, एंड ब्रोकर उस पे ऑब्वियसली ब्रोकरेज लगाएगा आपको। And we all know that intraday trades are to be settled in a day, so which is making it very risky, because if you are buying something on a higher price, and if the price is not going up from that price, then at the end of the day you need to sell your price, you need to sell your shares with a less price, so that means you are making a loss there, plus the brokerage, because you already borrowed some amount from the broker. So that's how, so so जब भी कोई इन्वेस्टमेंट की बात करता है तो people always say that don't go for intraday trading. सब जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है वो आपको बोलेंगे कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट नीड्स पेशेंस, सो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हम अंडरस्टैंडिंग द डोमेन नॉलेज के साथ साथ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बैंक का भी ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं। ओके, in the context of real estate, the difference between the current fair market value of the property and the amount the owner still owes on the mortgages. ओके, सो अगर हम रियल इस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इक्विटी क्या है रियल इस्टेट में, सो लेट सपोज मैंने एक हाउस परचेस किया है विच इज ऑफ 60 लाख, उसमें से क्या है ना, मेरा 40 लाख का लोन है, एंड 20 लाख मैंने खुद होके पे किया है। अब 5 साल बाद उस हाउस का जो प्रॉपर्टी है सपोज हो गया है कितना, 80 लाख, सो उसका 20 लाख का बढ़ा है एक्चुअली, बट जो 20 लाख बढ़ा है वो मेरा पूरा का पूरा अर्निंग है क्या, नहीं, बिकॉज वो 40 लैक्स पे मैं कितना इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, सो वो इंटरेस्ट उस बढ़े हुए अमाउंट से निकालने के बाद जो बचेगा, दैट विल बी माई एक्चुअल earning. So that will be called as real property value. Selling a property and paying off the omega also referred to as real property value. तो वो मुझे real property value मिला है उसका। Okay. Okay. In terms of investment strategies, equities are one of the principal asset classes. ओके, इन्वेस्टमेंट जो भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज होती है ना कि बेसिकली यू कैन डू इन्वेस्टमेंट इन अ डिफरेंट डिफरेंट वे, राइट, मतलब म्यूचुअल फंड है आज के दिन में, पीपीएफ है, पीएफ है, देन एनपीएस है, नेशनल पेंशन सिस्टम है, फिर इक्विटीज है वेयर यू कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट इन द कंपनी बॉन्ड्स, और फ्यूचर्स है, सब कुछ लोग फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, सो दैट्स ऑल आर इन्वेस्टमेंट strategies. Whatever I have just said, those all will be investment strategies, and equity will be one of the investment strategy. The other two are fixed income bonds and cash equivalents. Okay, these are used in asset allocation planning to structure a desired risk and return profile for an investment portfolio. This is important कि हर इन्वेस्टर का एक रिस्क पोर्टफोलियो होना चाहिए, दैट मीन्स कि वो कितना रिस्क ले सकता है। हम सब लोग बोलते हैं यार, इवन कुछ डायलॉग्स भी है, मोर रिस्क मोर रिटर्न, ऐसे हमने बहुत बार सुना भी है, बट रिस्क उतना ही लेना चाहिए जितना आपका एपेटाइट हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ 100 रुपए है और आप 200 और 300 रुपए का रिस्क ले रहे हो, विच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आज के दिन में वो मिराकल्स नहीं होते, सो बी केयरफुल बिफोर इन्वेस्टिंग। When a business goes bankrupt and has to liquidate, the amount of money remaining, if any, okay, that's important. After the business repays its creditors, this is most often called ownership equity, but is also referred to as risk capital or liable capital. हम हमने बहुत बार सुना है कि XYZ कंपनी हैज गॉन बैंकरप्ट, तो कंपनी बैंकरप्ट होती है मतलब क्या, कंपनी बैंकरप्ट होती है मतलब उसका वो कंसिस्टेंटली आइदर वो कंपनी लॉसेस कर रही है एंड नाउ उसका फंक्शनिंग भी सही से नहीं हो रहा है, एंड दे आर अनेबल टू पे देयर डेट।
ओके, सो इस सिचुएशन में क्या होता है ना कि कंपनी के जो भी असेट्स होते हैं, जैसे कि कोई लैंड हो या कोई ऑफिस हो या वट एवर मीन्स उनके जो भी अदर इन्वेस्टमेंट हो, उन सबको लिक्विडेट लिक्विडेट मतलब उनको सेल किया जाता है। और उनसे जो भी रिटर्न आएगा, जो भी पैसा आएगा, वो पहले अगर कंपनी ने किसी को बॉन्ड्स इशू किए तो बॉन्ड्स वालों को दिया जाएगा। उसके बाद फिर स्टॉक इन्वेस्टर्स को दिया जाएगा। तो विच इज ऑब्वियसली ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि आपने अगर 10 रुपए का स्टॉक लिया है तो आपको बैंक्रप्टसी के बाद 25 पैसे या 1 रुपया ही मिला हो पर शेयर। तो वो लॉस इस इनका भी, इन्वेस्टर्स का भी होता है। सो बी केयरफुल कि आप कौन से कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके, वाई इक्विटी? तो नॉर्मली कंपनीज इक्विटीज को क्यों प्रीफर करती है, कि व्हाई कंपनीज गिव देयर इक्विटी टू इन्वेस्टर्स? ओके, सो उसका रीजन है कि अगर सपोज कंपनी को ग्रो करना है या फिर उसको एक्सपांड करना है तो दे नीड मनी। तो वो पैसा कैसे बनाएंगे? आइदर दे नीड टू गो विद द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू गेट द डेट। बट अगर वो डेट लेते हैं तो देन देयर विल बी अ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे नीड टू पे। But offering equity is a safer plan for them कि वो कैसे पैसों को अरेंज करे। So that's why they go for equity. So they offer their equity shares to the market investors, and in the return they get money from the investors. So equity is important to business because it can be used to finance expansion. Okay, expansion finance करने के लिए equity use होता है। Funding business expansion by selling shares of stock to investors is equity financing. बिजनेस एक्सपांशन के लिए जो स्टॉक्स और शेयर सेल किए जाते हैं उनको इक्विटी फाइनेंसिंग बोला जाता है। When a company sells stock, it sells equity to investor for cash that it can use to fund growth. Okay, so जैसे मैंने पहले बोला कि कंपनी जब स्टॉक सेल करती है तो इन्वेस्टर से कैश लेती है और वो कैश वो यूज करती है उनके खुद के ग्रोथ के लिए। Equity financing is a way that companies can gain access to a large amount of cash without having to take on debt. Okay, so ये बहुत easy way है हर कंपनी के लिए to get more and more cash so that they can invest that cash in their core functioning to grow. और ये that's why they go for equity without having to take debt, और उनको कोई debt मतलब interest वाला पैसा भी लेने की जरूरत नहीं है। About equity. So क्या क्या टाइप्स है इक्विटी के? So um, there are few types of equity which I have shared here. So let's understand those one by one. Authorized share capital. It is the maximum amount of capital which can be issued by a company. ओके, सो ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी कितने भी इक्विटी शेयर्स मार्केट में उतार सकती है, नो। So there they need to get some authorization. So that's why authorized share capital. It can be increased from time to time. Some fees required to be paid to legal bodies accompanied with some formalities. तो उसके कुछ formalities complete कर सकते हैं वो for increasing that. Issued share capital. It is that part of authorized capital which is offered to investor. So जो भी शेयर कैपिटल होता है, लाइक इफ कंपनी इज हैविंग 1000 शेयर्स तो उसमें से उन्होंने लेट सपोज 500 और 400 ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को दे दिए। सो दैट इज नॉट their authorized share capital now. It's issued share capital because that is already issued. It's not with them to issue again. Okay. Subscribed share capital. It is that part of issued capital which is accepted and agreed by the investor. Okay. Then paid up capital. It is the part of subscribed capital, the amount of which is paid by the investor. Normally, all companies accept complete money in one shot and therefore issued. Subscribed and paid capital becomes one and the same. Conceptually, paid up capital is the amount of money which is actually invested in the business. Okay. Then there are other types of equity shares discussed below. Rights share. These are the share issued to the existing shareholders of a company. Such kind of shares is issued to protect the ownership rights of the investor. Then bonus share. These are the type of shares given by the company to its shareholders as a dividend. So we all know that if almost
each company try to give some dividend so that investors, whatever investors they have, they will be happy and they will feel intact to the company. So normally companies क्या करती है कि either some kind of money over the share, like let's say 5 rupees per share, um, after their year end, after their year end they issue 5 rupees of per share dividend, or else they give some bonus share from their authorized share capital to the user. So let's suppose I'm having 100 shares, so they what they issue, one share per 100 shares. So suppose someone is holding 100 shares, so he will get one share extra from company. That will be a bonus share. Then sweat equity share. The shares are issued to exceptional employees or directors or the company of their exceptional job in terms of providing know-how or intellectual property rights to the company. So ये क्या होता है ना नॉर्मली कि कुछ कुछ कंपनीज अपने स्पेशल एम्प्लॉयज को या डायरेक्टर्स को या फिर सीईओ जो होते हैं उनको कुछ शेयर्स देते हैं, और कुछ उनके टर्म्स रहते हैं कि they there will be various terms, so we all know that, but we need to understand that sweat equity share कब दिए जाते हैं और किनको दिए जाते हैं. Yeah, that's it guys, thank you for today. So आपको अगर कोई भी questions है regarding this equity and how equity works, um, please feel free to drop a comments in the comment section, and I'll definitely try to answer those. Thank you very much. Bye bye.